products which have done well. We also have leather and leather manufacturing segment which has seen a 24% growth over previous year. Electronic goods have also seen a major growth of nearly 41%. Our engineering exports have achieved an all-time high of $111 billion in 21-22. This is against 76 billion in the previous year. So this is the highest ever engineering products export from our country. And to US alone, which is a relatively developed market, we have had nearly 16 billion worth of engineering exports. Similarly, in electronic goods, we have achieved $15.58 billion, $15.58 billion of exports, vis-a-vis 11 billion earlier. So, as all of you know, India had been a major importer of electronic goods. We imported nearly 55 billion worth of electronic goods, and the PLI, the phased manufacturing program in electronics, has been a major success in ensuring that we not only meet a substantial part of our domestic demand, but also increase our exports. Similarly, all of you are aware that many agricultural commodities have done extremely well in the previous year. Last year, that is in the last financial year, our marine products grew by 31% and have touched nearly 8 billion in 21-22. Similarly, rice grew by 9% over previous year, and our total rice exports, both basmati and non-basmati together, reached $9.6 billion last year. Similarly, if you look at sugar, we had an all-time high export of $4.46 billion against 2.65 billion in the previous year. Wheat, as Honorable Minister has pointed out earlier also, saw a quantum jump in exports. From 20 million in the previous year, we have reached 70 lakh ton of exports, and in terms of value, we have done 2.05 billion of wheat exports, vis-a-vis only 0.53 billion in the previous year. Similarly, coffee has touched $984 million of exports, vis-a-vis 688 million in the previous year. Dairy products have also witnessed a jump. We have done $607 million worth of exports, vis-a-vis 310 million. So in agricultural products also, the portfolio has been fairly diversified, and a lot of different commodities have seen a jump. Similarly, in cotton, yarn, fabrics and made-ups, handloom products, we have seen a lot of jump in exports. Gems and jewelry, we have seen a 49% jump in exports. In coffee, it has been 49% jump over previous year. In jute, including floor covering in jute, we have seen a 36% jump in exports. In organic and inorganic chemicals, we have seen a 32% jump. So this indicates that India's export basket is not confined to only a few commodities or intermediate or raw materials, but is gradually also moving towards more of the manufactured and high-tech product segment. Our engineering exports as well as electronic export clearly indicates this. Similarly, if you look at the territories where we are exporting, earlier our exports were more or less to our neighboring countries, predominantly towards our neighboring countries, ASEAN, and our exports in the more developed market were relatively less vis-a-vis our other partners. But this year, we have seen a significant jump in exports to the developed market as well, to the USA, to Netherlands, to Singapore, Hong Kong, UK, Belgium, Germany, and exports have grown significantly to these markets. The exact growth in these markets will be shared with all of you after the press conference is over. As I pointed out, our engineering goods
have seen a significant jump, and USA has been the #1 market. For petroleum products, UAE has been our #1 market. For gems and jewelry, China has been our #1 export destination. For organic and inorganic chemical, Bangladesh has been our #1 export destination. And for drugs and pharmaceutical, Netherlands has been our major export destination. So this indicates that as far as the export destination is concerned, our exporters have also made a significant difference in finding new territories, new markets, and penetrating some of the existing markets in a much better manner. So with this, I'll end and request Commerce Secretary and Honorable Minister to take over. Thank you. धन्यवाद सारंगी जी। मित्रों, सबसे पहले तो नववर्ष हमने कल ही मनाया है। नवरात्रि में हम सब मिल रहे हैं। आप सबको और आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई। आज वास्तव में हर भारतीय का सीना चौड़ा होगा, गर्व से भरा होगा, जब वो देखेंगे कैसे भारत तेज गति से आत्मनिर्भर बन रहा है, आत्मनिर्भरता की तरफ तेज गति से अलग अलग वर्गों को साथ लेकर सबके प्रयास से भारत में कई सारे महत्वपूर्ण और जरूरी माइलस्टोन्स अचीव किए जा रहे हैं। अभी अभी डीजीएफटी ने बताया कि $418 बिलियन यानी 31-32 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भारत ने पहली बार अपने इतिहास में किया है, और जो टारगेट सेट किया था उससे भी लगभग 5% ज़्यादा। मार्च महीने अकेले में $40 बिलियन एक्सीड किया, जो आज तक का इतिहास है। कभी $40 बिलियन एक्सपोर्ट किसी एक महीने में आज तक हमने नहीं किया। इस साल एक और बड़ी अच्छा संजोग रहा कि हर महीने 12 महीने तक $30 बिलियन से अधिक हर महीने निर्यात हुआ है। ये मैं इससे बता रहा हूं कि कंसिस्टेंसी कैसी रही है और किस तरीके से कोविड के 2 वेव्स, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, दोनों के बावजूद ये पूरा देश का हर उद्यमी, देश के हमारे एमएसएमई सेक्टर के मित्र, हमारे अन्नदाता, हमारे किसान, सब ने कैसे मिलके देश को नई नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का काम सफलतापूर्वक किया। हाल में एक पिक्चर चल रही है RRR, मैंने सुना ये शायद आज तक की भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चित्र होने जा रही है। 750 करोड़ से अधिक तो कमा चुकी है। मुझे लगता है ऐसे ही अब भारत की अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब हम सबको आत्मविश्वास दिया कि हमने बड़े लक्ष्य रखने हैं और ये देश की काबिलियत ऐसी है कि बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं, तब वास्तव में कई लोगों को संदेह था कि संभव नहीं है। लेकिन असंभव को संभव बनाना और उसके लिए दिन रात मेहनत करना, उसके लिए पूरी सरकार एकजुट होकर काम करे। हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, अलग अलग सेक्टर के लोग सब मिलके एक लक्ष्य के पीछे जब पूरे प्रयासों को केंद्रित कर दें तो कोई काम असंभव नहीं रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्साहवर्धन सभी निर्यातकों को, सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, सभी जो सरकारी तंत्र हैं राज्यों में, केंद्र में, सबको जो प्रोत्साहन भी किया, उसी की वजह से मैं समझता हूँ देश में ये आत्मविश्वास जगा कि हम ऐसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे
मैं आज देश के सभी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, एमएसएमई सेक्टर के हमारे निर्यातक, हमारे किसान भाई बहन, हमारे जितने मिशंस हैं विश्व भर में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई इसमें, हमारे सभी अधिकारी, सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं लेकिन पूरी सरकार के अधिकारी, सभी राज्य सरकारें, सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं आज के इस बहुत प्रमुख उपलब्धता पर। अभी अभी आपने सब अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े देखे, उससे आपको ध्यान आएगा कि ये बढ़त अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में हुई है जो सामान्य छोटे उद्योग को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है या किसानों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाता है। आखिर $50 बिलियन का जब लक्ष्य यानी लगभग 3,75,000 करोड़ का लक्ष्य हमने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में रखा था, तब शायद ही कोई है जिसको लगता था कि ये संभव हो पाएगा। पर हमारे किसानों को मैं बधाई दूंगा जिस प्रकार से उन्होंने लगातार कोविड के बावजूद देश में उत्पादन बढ़ाया, जिस प्रकार से उन्होंने अच्छी गुणवत्ता का परिचय दिया। आज ये स्थिति है कि कहाँ 2019-20 में गेहूं मात्र 2 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ था और 2 लाख टन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए का गेहूं निर्यात हुआ था 19-20 में। 2020-21 में उसको बढ़ा के 21.55 लाख टन का गेहूं का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4,000 करोड़ हो गई। तो यानी 500 करोड़ से बढ़ के 4,000 करोड़ एक साल में। और पिछला वर्ष जो अब खत्म हुआ है उसमें 70 लाख टन से भी अधिक, अब फाइनल आंकड़ा आएगा तो शायद 72-73 लाख हो सकता है, 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की गेहूं हमारे भारत से विश्व में गई है। विश्व में अलग अलग देशों की उसने खाद्य सुरक्षा की चिंताओं को मिटाया है। इसी प्रकार से जैसा बताया गया, इंजीनियरिंग गुड्स हो, सोने चांदी का, डायमंड का, हीरे जवाहरात का व्यापार हो, चाहे वो टेक्सटाइल क्षेत्र का व्यापार हो, और टेक्सटाइल क्षेत्र हीरे जवाहरात बनाना, लेदर गुड्स बनाना, चमड़ा का व्यापार, जूट के प्रोडक्ट्स बनाना, ये सब आप लोग जानते हैं कि बड़े लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं। इसमें बहुत लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। और मैं समझता हूँ एक तरफ किसानों को और समृद्धि मिले, हमारे छोटे सूक्ष्म और लघु उद्योग को समृद्धि मिले, एमएसएमई सेक्टर को बल मिले और लोगों को काम करने के नए अवसर प्रदान हो, लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स को और गति मिले, उसके लिए ये सरकार लगातार प्रयत्नशील है। आपने देखा हाल में ही हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया दोनों के जो एग्रीमेंट्स किए हैं, एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें हमारा फोकस रहा है कि अधिकांश लेबर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को लाभ मिले, किसानों के क्षेत्र में लाभ मिले, कैसे उससे अधिक निर्यात भी हो सके, कैसे देश में और ज़्यादा हर जिला तक निर्यात के पीछे एक प्रतिबद्धता, निर्यात के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, जिसके लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हमारा कार्यक्रम चल रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से पहले 14 और फिर अब सेमी कंडक्टर ऐड करें तो 15 सेक्टर्स में ग्लोबल स्केल पे भारत जाए, अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्शन करें, इन सब चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है। और हमारा विश्वास है कि टीम इंडिया की स्पिरिट, जिससे हम सब आज के दिन पूरी तरीके से काम में जुटे हुए हैं, जिसमें कोविड जैसी महामारी भी हमको रोक नहीं पाई, जिसमें एक युद्ध प्रकार की स्थिति भी हमको रोक नहीं पाई, ऐसी परिस्थिति में ये पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा आनंद का माहौल देने वाली खबर मैं आज आप सबके समक्ष रख रहा हूँ।
प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था लोकल गोज ग्लोबल, और वास्तव में आज के दिन जो भारत में बने वस्तुएं, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आज पूरे दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। अलग अलग विकसित देशों में भी भारत के सामान की डिमांड बढ़ रही है। ये दर्शाता है कि जब नेतृत्व निर्णायक हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक नेता जो लोगों को साथ में लेके सबके प्रयासों से देश को आगे ले जाने के लिए होल ऑफ द गवर्नमेंट, और मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने आज होल ऑफ द नेशन अप्रोच को प्रतिबद्धता दी है, सबके प्रयास को साधुवाद किया है। लगातार नियंत्रण करते थे क्या प्रोग्रेस हो रहा है। कभी कोई तकलीफ आती थी तो उसका समाधान करने में अलग अलग विभागों का सहयोग करते थे। तो रात दिन काम करके भारत इस नए युग में प्रवेश करे, नई ऊंचाइयों तक भारत पहुंचे, इस काम के लिए हम सब मिलके पूरी तरीके से संकल्पित हैं। मीडिया के मेरे मित्रों ने पूरे वर्ष हम सबको जो सहयोग दिया, जिस प्रकार से आप सबने हमारे ऊपर नियंत्रण भी रखा एक तरीके से, और हमें प्रोत्साहन भी करते रहे अपने अपने वक्तव्यों से, अपने अपने सूचनाओं से जो देशवासियों को आपने पहुंचाई, इसके लिए तहे दिल से आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। Thank you, sir, for giving the overall context within which this success was achieved. We'll now start with the question and answer sessions. Please restrict your questions to the export, and you can raise your hand and you can go. Yes. Some states, particularly Telangana, is demanding for export concession and incentives for paddy and rice procurement. The Telangana government. This is about exports? Yes, sir. Well, I think we have been able to achieve such wonderful results without any specific subsidies and grants. And that is the way to go. I have consistently held that no nation can progress beyond a point. You can handhold up to a level, but ultimately we have to stand on our own feet. We have to engage with the world from a position of strength, with self-confidence, on the basis of our competitiveness and our high quality. And that is reflected in the achievement today. And we would like to encourage India in this same fashion to go for greater world engagement with confidence. And I am confident that we will be successful. Yes, please go सर, ahead. 21-22 में ओवरऑल एग्री एक्सपोर्ट हमारा कितना बढ़ा है 21-21 के मुकाबले? मैं आंकड़े बता देता हूँ, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है, हाँ, एग्रीकल्चर जो है अलग अलग जगहों पे रहता है और एक अदर्स में भी छुपा रहता है। जैसे चावल के लिए अलग लाइन है, गेहूं अदर्स में आता है, तो हमने सब इकट्ठा किया है और इकट्ठा करने से पता चलता है गत वर्ष हमारे डेटा 21 मार्च तक है, क्योंकि क्या है इसको तोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 दिन लगते हैं। मोटा मोटा अगर देखा जाए पिछले वर्ष 21 मार्च तक 40 बिलियन $40.35 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हुए थे, और इस वर्ष वही फिगर 48.59, इट्स अ गुड 20% जंप एक हफ्ता कम छोड़ के। और मैं यहाँ मैंने गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ, अगर 21 मार्च तक 48.5 बिलियन हो चुका है तो ये 10 दिन जो उसके बाद गुजरे हैं ये तो 50 टच कर ही गया होगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिस गति से खास करके एग्री में अब राइस हो और व्हीट हो, इतना ज़्यादा निर्यात, आई मीन कल के दिन फ्लैग ऑफ होने वाला है काकीनाडा से राइस कंसाइनमेंट टू श्रीलंका, जहाँ पर खाने को नहीं मिल रहा है। वो हमारे देश ने क्रेडिट दिया है, उसी क्रेडिट से, लाइन ऑफ क्रेडिट से, आप पेपर में पढ़ रहे हैं श्रीलंका में क्या हालात हैं। तो विश्वास है कि तो 50 बिलियन टच कर ही गया होगा। और जो जंप हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, केवल बासमती ही नहीं, नॉन बासमती में भी हुआ, केवल व्हीट एक जगह से नहीं, पूरे देश में चारों कोनों से। और इसी तरह आप श्रिम्प देखेंगे, मराइन प्रोडक्ट्स देखेंगे, इट्स अ ह्यूज जंप एवरीवेयर। Yes, please go ahead, Sandeep. What should be the strategy in terms of, because this is the first time ever this huge increase in wheat export is taken place, but the fact is that we export wheat only from Gujarat side. We has a history of exporting of other
exports. What is the next target for the next year? Because the Ukraine crisis and all, and the shortage in the wheat. We will continue to export wheat in a big way to meet the needs of countries who are not getting their supplies from the conflict area. And my own sense is this time we will probably exceed our wheat exports over 100 lakh tons and 10 million tons comfortably. And our farmers are focused on increasing production also. Incidentally, it's not only Gujarat, Madhya Pradesh and that region has also started exporting in a big way from last year. UP has started exporting, and Madhya Pradesh has given a lot of concessions. The Chief Minister met with me in Delhi, then had a meeting with wheat exporters on 29th March in Bhopal, and again tomorrow. He is meeting me to further. So you see the aggression with which the government and state governments are working together. Chief Minister would have had 3 meetings only on wheat export, Chief Minister of Madhya Pradesh. Once in Parliament with me 10 days ago, 29th in Bhopal, tomorrow again in Parliament. And in one of such meetings, sir, he also agreed to reimburse the mandi tax which MP is collecting. So that was an instant decision which was taken by both Honorable Minister and CM Madhya Pradesh working. But as Mr. Sandeep was asking, in addition to major exports from Kandla port, there is also an effort on the part of Department of Commerce and Department of Food and Public Distribution to facilitate export from other ports as well. So for that, availability of rakes, movement of rakes to the southern ports and to Nhava Sheva and all, that discussion is going on with railways, and hopefully in the days to come, as you know, wheat export is actually allowed from all EDI ports, but major export was happening from Kandla. So in the days to come, the facilitation for allowing wheat exports or greater wheat exports from Vizag, Kakinada and Nhava Sheva, that's a work in progress with railways. And one minute. I'll just complete the DGF time. This is slightly, the exports from Kandla is just incidental. The wheat is going from many places across, a lot of Madhya Pradesh wheat, a lot of Gujarat wheat. Gujarat wheat has a specific quality. So it's got a market of its own. Madhya Pradesh is very high quality. It has got a market of its own. The other is the big jump in wheat exports from India are actually to Bangladesh. And so we have almost crossed 3.5 million tons to Bangladesh. Most of it goes by actually land and rail. Petropol se sab nikalta hai. So about 50% of the exports are going through Kandla. A lot of other ports are taking 2 lakh, 3 lakh tons, etc. And Bangladesh is largely through Petropol. So why it is Kandla is largely because how shipping lines are operating. They offer good rates, good rail movement there, etc. As other rice exports, Kakinada seems to specialize. So the ports specialize in handling 1 or 2 products, and so that's why a lot of it goes from a particular. So what was the quantity for Bangladesh that you mentioned? 35 lakh tons. 3.5 million tons. Yes. Sir, ये 22-23 के लिए बताया था ना 110 million ton गेहूं 110 lakh. 100 lakh टन से अधिक जाएगा, मतलब 10 मिलियन. Ravi from Mint. Next. Sir, what is the contribution of exports in contribution of finished products in the total number compared to the exports of raw materials, commodities, both in value and Well, when we look at the overall export, commodity wise, you will find that even our petroleum exports are all processed and exported into finished goods. So, by and large, majority of the goods that we are sending, other than of course the agricultural 50 billion, most of the goods are processed goods. Probably iron ore would be the one item which is non-processed in a big way. Cotton is another product which we are exporting in a big way, which is not processed, but cotton would be a part of our agri exports. So other than agri, it would probably be only iron ore, which I can imagine is a raw material export. Would you agree with that? Yes, sir. Other than that, we are largely a processed country exporter, which is why it's very important for us to have free trade agreements with the developed world, so where we can have value-added exports going to these countries, creating jobs for our boys and girls in India. And I'll just add, since you asked that question, that's something I wanted to say. India is no longer an exporter of primary goods.
That's, I think, the big thing which you should take away at the end of 21-22. 100 billion out of the 400 billion is engineering goods. And जो साहब बता रहे थे iron ore. In fact, iron ore exports have declined over the last year because of the Atmanirbhar policy to actually promote manufacturing of iron and steel in India. The three sectors which may not look very stellar when the detailed data is released or when they put it on the website, you will find all are linked to Atmanirbhar. You have iron ore, you will have oil meal, because you would actually like to do better on that. And the third one would be something like that. So these are the areas which are actually the government is deliberately saying we should manufacture here and export the manufacture. So if the growth is across, as Sabha has said, petroleum, it's a manufactured item. Even in cotton, the entire textile sector has done about $30-35 billion, of which cotton raw is only less than 3 billion. The bulk of it is, be it yarn, be it fabric, be it garments, is all actually processed. So it actually a processed. Mobile exports, I think, have crossed $6 billion. 15. That's all electronics. That's electronics. All electronics. And all electronics. Of which about 6-7 billion is only mobile phones. So actually, we are becoming a dominant player globally. In fact, when we are looking at Russia and we saw what is getting affected, our worry was mobile phones. We didn't realize that we sell $2 billion of mobile phones to Russia. So we are a major brand presence in Russia. Next, Rajesh. Rajesh from Piyush. So based on this 21-22 numbers, which will be the top 5 trading partners of India, sir? Our process is not a top-down approach. So we are in dialogue with all the missions. We are talking to them to understand what is the potential growth in each of those countries, which products, what level of new targets we should set. It is only after that we'll be able to tell you the top exporter destinations. But clearly the US, for example, the European Union, UAE, these are some of the top export destinations. Bangladesh, nearly $10 billion. So these are broadly the top export destinations. But finally, once we get the missions data, what they think is possible, we'll be able to close the loop on the next year's top destinations. Thank you. So if I may ask one question on the overall trade target setting for the coming year, are you looking at setting a more ambitious target? What is the process likely to be? The process is totally bottom up. We talk to all the export promotion councils, all the industry majors, the major importers, exporters, the sectoral associations, and then dovetail that data with the missions. So we're doing a mission-wise breakdown, country-wise and sector-wise, and then matching the data with the missions confirmation that they can achieve that kind of figures for export from India. We validated with multiple rounds of discussions with the EPCs and then set up an ambitious target. You'll hear about it as we have all this data. We'll be starting to discuss with each of these. Perhaps in a month or two, we'll be setting. Well, it's up to the stakeholders. They have to respond as quickly as possible. But of course, you will bear in mind that there is a conflict situation going on, because of which shipping lines are disturbed, container shortages are there, shipping costs have gone up, and trade and supply chains are affected worldwide. So it is actually with a great sense of satisfaction that we've crossed 40 billion in March with all these difficulties. So therefore, we are confident of greater exports. We now have 2 FTAs also. UAE will come into effect on or about 1st May, roughly. So all of these will also help us to give a leg up. Thank you. Thanks, sir. Thank you for coming on a Sunday afternoon.